Welcome, my friends. Welcome once again to my YouTube channel. Today's topic is on risk management, probability and impact in risk management. Probability क्या होती है, impact क्या होता है risk management में. This is going to be our topic today. Let us start with this important quote. A ship is safe in harbor, but that's not what ships are for. So when you are in projects, you can't be leaving behind and saying everything will go smooth. उसके लिए प्रोजेक्ट नहीं बने. Projects has got all the risk, many risk, those needs to be managed. That is part of project management. प्रोजेक्ट में रिस्क आएंगे, हाउ विल वी मैनेज, कैसे हम मैनेज करेंगे, उस पे सब कुछ प्रोजेक्ट का सक्सेस डिपेंड होता है. When you talk about risk, we must be hearing about two important words, probability and impact. जब हम रिस्क के बारे में बात करते हैं, हम दो वर्ड्स को हमेशा सुनते हैं, probability and impact. जनरली एक ग्रिड है. देर आर केसेस जिसमें हाई प्रोबेबिलिटी और हाई इम्पैक्ट होता है. देर आर इंस्टेंसेस हाई प्रोबेबिलिटी एंड हाई इम्पैक्ट. देर आर रिस्क विथ लो इम्पैक्ट हाई प्रोबेबिलिटी. देर आर रिस्क विथ हाई इम्पैक्ट लो प्रोबेबिलिटी एंड देर आर रिस्क लो इम्पैक्ट प्रोबेबिलिटी. जनरली विद दिस वी प्रायोरिटाइज आवर रिस्क. इसके हिसाब से हम रिस्क को प्रायोरिटी में लेके आते हैं, क्योंकि हम एवरी रिस्क को वी कांट कैटर, अदरवाइज विल स्पेंड लॉट ऑफ टाइम ओनली मैनेजिंग रिस्क. इसके लिए हम प्रायोरिटी करते हैं, और प्रायोरिटी के लिए हम हाई इम्पैक्ट हाई प्रोबेबिलिटी पहले लेते हैं, उसके बाद अगली प्रायोरिटी लेते हैं, एंड दिस इज हाउ वी प्रायोरिटाइज आवर रिस्क. सो लेट अस लुक एट ये सब चीजें इन अ सिंपल फॉर्म क्या होती है. सो आई गॉट वन स्केच which is very clear. The first is this risk. When person is walking, there is a hole over here, and there are chances that he will fall into it or he will get strangled into it because of this. And there is a more probability. So यहाँ पे ज्यादा probability है कि इधर गिरे या फिर यहाँ पे फिसले, बट उसका impact कम हो सकता है because ये छोटा गड्ढा है, because the depth of this is very small. It will have low impact. So this is one example of high probability low impact. आप गिरोगे यहाँ पे, फिसलोगे, लेकिन ज्यादा चोट नहीं आएगी. That is what high probability low impact. You will fall, but you will have less impact. Let us look at the next example of low probability but low impact. In this case, same person, ये जो खड्डा है उसकी width बहुत छोटी है, यहाँ पे गिरने के chances बहुत कम है, और अगर गिरा क्योंकि इसकी डेप्थ कम है, इसको इम्पैक्ट भी कम हो सकता है. सो दिस पर्टिकुलर होल और पॉट होल हैज गॉट अ स्मॉलर विड्थ which anybody can cross it easily, so there are no chances of getting trapped or falling down. Even if he falls, the width and the depth is so low, nothing will happen. So this is an example of low probability and low impact. The third one has got low probability and high impact. The difference here is the depth of this valley or hole on the road is very high. So if he falls, he will have high impact, but the width is very less, so there are less chances that he will get inside. But if he gets inside, he will have high impact. एक केस में डेप्थ बहुत ज्यादा है, विड्थ कम है, he can easily cross over. इसके लिए यहाँ पे गिरने की संभावना कम है, लेकिन अगर गिर गया तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा, बिकॉज एक जो गड्ढा है बहुत डीप है. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ लो प्रोबेबिलिटी एंड हाई इम्पैक्ट. द लास्ट वन इज हाई प्रोबेबिलिटी एंड हाई इम्पैक्ट, वेयर यू कैन फाइंड द विड्थ इज सो बिग, डेप्थ इज आल्सो सो बिग, सो देयर इज नो चांस दैट ही कैन जनरली गो ओवर फ्रॉम हियर. हाई प्रोबेबिलिटी इधर गिरेगा ही, और क्योंकि यहाँ पे गिरेगा जो बहुत ही डीप जगह है, इस पे इम्पैक्ट ज्यादा होगा. देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट ही विल फॉल बिकॉज़ ही कांट क्रॉस इट लाइक दैट, एंड इफ he falls down, he will have major impact. So these are some of the examples, very simple examples from where you can build on our ranking of high probability, low probability of the risk. Hope the video is useful, and I request all of you to subscribe my channel, follow me on YouTube, Facebook, LinkedIn, and ajaazkazi.com. Thank you very much.